Namaste guys, ये vlog dedicated है ground level struggle of Porto to Lisbon. Let's enjoy it together. So today our room owner is coming at 3 o'clock and we have to clean all over the surface, all over the room. So we are going to do that and look at the room condition right now. तो हमें ये मिरर भी साफ करना है और जो सारे कचरे मैंने फैला के रखे हैं यहाँ पर ये सब कुछ साफ करना है. So क्या ये मजदूरी है क्या? चाय एक कप? मजदूरी मजदूर को दिया जाता है, गुलाम को. Oh my God, मैं गुलाम हूँ इतना काम करने के बाद. एक कप चाय पे पूरा घर साफ कर रही हूँ मैं आज. इसको साफ क्यों? जी सर करते हैं, थोड़ा गंदा है, करते हैं साफ. बाप रे, नजर भी रखा जा रहा है. वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से किचन क्लीन कर दिया. थैंक यू. नाइस. हमारे रूम ऑनर देखेंगे तो हम लोगों को जाने भी नहीं देंगे यहाँ से. इतना अच्छा क्लीन रख रहे हैं हम. क्या लगता है तुम्हें? क्या होगा तो मुझे लगेगा कि यार इतना साफ केस कोई कैसे रख सकता है. और ये दिस इज द वॉशरूम जो मैंने अभी भी जस्ट क्लीन किया है. सो बेसिकली वी आर मूविंग इन 2-3 days एंड जाने से पहले हम अपने घर को बिल्कुल पहले की तरह बनाना चाहते हैं जो जब हम आए थे दैट टाइम जैसा भी था एंड वो वैसा ही है. एंड यस विल मिस दिस व्यू. फाइनली हमने अपना घर बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और कभी अगर आप लोगों को भी घर क्लीन करवाना हो तो हमें बुला सकते हैं. मुझे तो बुला ही सकते हैं पर इनको बुलाना मत भूलिएगा. ये बहुत अच्छा किचन साफ करते हैं. ऑल द टाइम नहीं, सिर्फ आज. अब हम जा रहे बाहर पोर्टो व्यू देखने. Because maybe this will be our last weekend. कितने देर का काम है पैकिंग करना? क्या है, 4 कपड़े उठाने होते हैं. अच्छा 4 ही कपड़े हैं. क्या होता है, 10 मिनट का काम पैकिंग करना. तो कर लो ना, अभी पैकिंग कर लो. 3 दिन घूमेंगे कि 3 दिन अब एट द एंड मोमेंट में पैकिंग करेंगे. तब पैकिंग कर. मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं कैसे पैक करेंगे सारा सामान. इसको टेंशन ही नहीं है. अरे क्या होगा, 1-2 पोटरी होगा. तुम्हारे ये भाषा तुम पे शोभा नहीं दे रहा है. हर 2 दिन पे जो सिटी चेंज करते रहते हो, हर 2 दिन पे घर चेंज होता है हमारा. लोग बोलते हैं भाई अब सेटल हो गए, हमारे लिए कोई सेटल वर्ड ही नहीं है. हम जहाँ सेटल होने लग जाते हैं वहाँ से सीधे अनसेटल हो जाते हैं. जॉब चेंज, कंट्री चेंज, सिटी चेंज. हम लोग चेंज करते. कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे. मुझे नहीं पता आज शॉपिंग क्यों बोलती हूँ मैं. आज पैकिंग करो एंड कल फिर चलते हैं शॉपिंग करने. क्या नहीं, पैकिंग कब होगा? क्या शॉपिंग तो आज शॉपिंग आज होगा. और जैसे ऊपर जाएंगे हाँ और ऑनर आएगा, ऑनर को घर दिखाने के बाद जब भी ऑनर निकलेगा हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग निकल लेंगे. अच्छा ठीक है, शॉपिंग के लिए राइट. अच्छा मुझे पठान भी देखना है कल. पठान देखेंगे. ओह माय गॉड, इट इज सो क्यूट. इसको कहाँ रखोगे? ये जो लाखों सूज है इसको कहाँ रखोगे? इसमें. अच्छा इसको भी बैग ही बोले. ये सब सामान भगवान भरोसे. और ये काला माथा पे लेके जाएंगे इसको. हम घर छोड़ दे. आपको ही सब जाता है, अगर आपको हमें जर्मनी अभी जाना होता तो हम क्या करते हैं. बाप रे इतना सारा सब. Today is our last evening in Porto. We are going to try this coffee plus Natal. This is the big queue of coffee and Natal. I'll tell you what is Natal. It's here. Thank you. Yes.
So first time I'm going to eat this, I think. I think I need tissue. It's very sweet. It's really tasty. What is there inside? Sweet Cream. cream. No, it's not cream. It's kind of milk with before it's making completely dry. Hoa, you know. Before it's dry. Awesome. Yeah, it's extremely sweet. But it's nice. Good. Finally, we ate nata and pastel de nata, and without coffee. Now we are going to the again shopping area because we don't have much dress to go to the Lisbon. We have enough dress. No, we don't have because only we filled 5 trolley. We don't have anything to wear, so we are going to buy something. पैसे होते हैं ना तो लोग ऐसे ही फिजूल खर्ची करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये कुछ भी कर रहे हैं और हमारे पास बहुत पैसा है. Finally we are in the shopping mall and we are trying to not get any of the dresses. We don't know how we can reject the dresses. Yes. We are finding the way to reject the dresses. Yes, and last 1 hour we are just looking for one simple hanky which is not available any of the store. Here people are not using, I think. This is the boys section and look at this boy. He just want to try all the dresses in the trial room and then he will decide. I know. If we buy something today, we don't have space in our luggage. I don't know how we will take all the stuff. Let's see what we are going to find today. And this is my window view in night, and I'm damn sure I will not able to find out this beauty again. Hello guys, so finally we are ready to move to Lisbon. We have a train around 11 o'clock and we have so many luggage. I don't know how it will go in the train. This much. We have 4 luggage and 3 handbag. It's too much. In India we can move easily by train with this much of luggage, I think, but here I don't know. This is our first time, but we are definitely gonna miss this view. Catch you in the train. Finally we reached to the train station. This station is not so fancy. It looks like old. Let's see how we can settle the luggage in the train. Here is the best part. Our all luggage are settled in the train. So yeah, now we are ready to go without any stress. इस ट्रेन में चाय बेचने नहीं आता. चाय. Boarding safar है 3 hours. We reached to Lisbon. And here in Lisbon, our room owner is here to welcoming us. Let's do a room tour, guys. ये हमारा बेड 1 है and ये हमारा beautiful living room है. And yeah, my most favorite part is the balcony. The sunny view balcony is extremely nice. And I'll show you the second room. Yes, and यहाँ से आप जाओगे तो राइट साइड में रूम नंबर 2 है.
ये पता नहीं किसका रूम है, मैं तो नहीं रहने वाली और यहाँ हमारा फेवरेट किचन है. So this is our Porto to Lisbon journey and I hope you enjoyed as like us. See you in the next video. Bye bye.